जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सदर सुल्तानुल एजुकेशन सोसाइटी आली जनाब मोहम्मद वलीउल्लाह साहब, जिम्मेदारान सोसाइटी, असातिज़ा, तुलबा तलबा, आज ये बहुत ही खुशाइन दिन और मौका है कि हम हमारी यौम आज़ादी मना रहे हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मुक़द्दस दिन है और मौका है जब हम आज़ादी मनाते हैं। ये बड़ी ही मुश्किल के साथ हमको हासिल हुई है। जब मैं परसों ऐसे ही पढ़ रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे, वो 17 साल इस दिन के लिए जेल में काटे। 17 साल एक बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है। और ये क्यों कि आज आप एक आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी रहें और एक आज़ाद सांस ले सके। गुलामी एक ऐसी चीज है कि आप रोज देख सकते, अगर आप कोई एक परिंदे को जो है
पिंजरे में बंद कर डाले तो वो पिंजरे के दायरे में जो है घूमते रहता और बाहर निकल नहीं सकता, कुछ अपनी जहन और अपनी ख्वाहिश कोई चीज कर नहीं सकता। जब पंछी निकलता है बाहर तो आप देखिए कि एक क्या खुशी की लहर रहती, फौरी जो है ऊंचे आसमान में होता है। आप लोग इतने छोटे हैं कि आप लोग कोई अब तो आज़ादी के बारे में उतना कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता है शायद। बहुत ही मशक्क़त, बिलखुसूस जब महात्मा गांधी नॉन वायलेंट तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़े, ब्लडशेड में जो है आसान रहता, यानी जाने जाती गुलाम होती, बट नॉन वायलेंट अंदाज से जो है आज़ादी हासिल करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। आप लोगों के पूर्वज कितनी मशक्कत करे, शायद आप लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं है। और उसकी आजादी का नतीजा था कि आज हम किस तरह जिए, हम देश को किस तरह कहां ले जाए, वो हम खुद अपना फैसला कर सकते हैं। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी हम बनाते, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम बनाते, यानी जो जो भी चीज़ों को मुल्क की ज़रूरत रही वो जो है हमारे फैसले हम खुद लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी आज़ादी है। आप अगर गुज़िश्ता आज़ादी से लेके आज तक अगर तारीख देखें मॉडर्न इंडिया की, तो हम कहां से कहां आ गए, कितनी गुर्बत थी, मगर हम चूंकि गुलाम नहीं रहे, चूंकि अपने फैसले खुद ले सके। We are today one of the most modern economies, the modern forces, armed forces in the world today. We can combat any enemy which we have very recently seen. Today you are not fighting a war with one country. It's very popularly mentioned, I'm sure you would have read it, that even in this Operation Sindoor which happened just now, you were combating Chinese aircrafts, Chinese tanks. So you're not only fighting Pakistan, but you're also fighting China and the allied forces. And thanks to our forefathers, we've been able to, design our own policy and take our own decisions which we feel are good for us, good for the nation. And I'm sure at this juncture the population of India today is a boon for us. We have the youngest population in the world, and even Donald Trump today is stumped by your youth force, the people the trained youngsters of the country, which have almost virtually taken over the US. We are in a position today to dictate the US economy and to control the US economy. And this we could do only because
we did what we thought was best for the country. India in you sees a very bright future. We have great hopes from the youngsters sitting here. I am sure with the dedication and commitment to the nation, we will do exceedingly well in the years to come. A very bright future lies ahead of you, and it's a great responsibility, youngsters. You will have to dedicate yourself like your forefathers did for the nation. And I'm sure when I see these students doing their march past and parading so well, the commitment they have, the practice they would have done, the hard work, this is all going to pay in the times to come. I wish you all the very best, and I'm sure you're going to put your best foot forward and take the nation forward. I thank our chairman, Mr. Waliullah Sahab, for having given me this opportunity to express myself before. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. You truly sparked the patriotic spirit. Respected principals, teachers, and my dear students. Today marks the 78 years of independence. After several years of struggle, India attained independence from the British rule. Our ancestors have sacrificed their lives to get independence from the British rulers. Today is not only a day of joy or happiness, but also a day to remember those who sacrificed their lives. वतन की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको हम याद रखना चाहिए. The first Prime Minister of independent India, Pandit Jawaharlal Nehru, celebrated the Independence Day by hoisting the Tiringa flag on the Red Fort, Lal Killa. On this occasion, our thoughts first go to Mahatma Gandhi, who struggled peacefully to get his independence from Britishers. We should also remember the last Mughal king, Bahadur Shah Zafar. He was taken to Rangoon, Burma, and kept in a jail. Before his death, he remembered his motherland, India, and wrote a very, very sad शेर, poetry. कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, दो गज ज़मीं भी न मिली कोई यार में, दो गज ज़मीं भी न मिली कोई यार में. How unfortunate is Zafar. He could not get 2 yards of land in his own motherland for burial. Sultan Education Society is a true secular society. We have people from all the communities working here peacefully and sincerely. All members of the society are truly secular-minded people. We request and advise you all to please respect and obey your teaching staff and maintain good discipline. I thank you all, especially our Dynamic Secretary Sahab, Janab Zafar Javed Sahab, for inviting me to come for flag hosting and preside over this function. Once again,
We wish you all a happy Independence Day. और इस मौके पे इकबाल का प्यारा एक शेर सुनाते हैं मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। शुक्रिया। Thank you, sir. Dear viewers, you have just witnessed the Independence Day 2025 celebrations at Sultanul Uloom Education Society. The program began with the flag hoisting, followed by the students' parade and inspiring speeches. Now you are watching the felicitation ceremony, where students from different institutions of Sultanul Uloom Education Society were honored with checks for their remarkable achievements in the field of sports. The awardees included students from MJ College of Engineering and Technology, Sultanul Uloom College of Law, Amjad Ali Khan College of Business Administration, Sultanul Uloom College of Pharmacy, and the Junior College. Thus, the Independence Day was celebrated with great respect and pride across the Sultanul Uloom Education Society campus. Thank you for watching. Please subscribe to Mags Horizon YouTube channel for more updates.